Hello everyone, welcome to our channel Science Side. Today we will discuss important questions from biological classification. So let's start. So the first question is, some bacteria thrive in extreme environment conditions such as absence of oxygen, high salt concentration, high temperature and acidic pH. Name them. वैसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक पीएच. ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं. Now let's move on to question number 2. All the bacteria fix nitrogen except. इनमें से सभी बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कौन नहीं करते हैं वो बताना है. ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इकोलाई. राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, बट इकोलाई नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज द रीजन वेयर बैक्टीरियल जीनोम रिसाइड्स इज टर्म्ड एज. वो रीजन जहाँ बैक्टीरियल जीनोम रहता है वो रीजन को क्या कहते हैं. ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी न्यूक्लियाइड, option D ribosome free region. So the correct answer is option C nucleate. Now let's move on to question number 4. Fourth question is fungi which grow in dung are termed as. फंगी जो डंग में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं. ऑप्शन ए कैप्टोफिलस, ऑप्शन बी टेडिकुलस, ऑप्शन सी सेक्सिकुलस, ऑप्शन डी सेक्सिफिलस. The correct answer of this question is option A Caprophilus. Now let's move on to question number 5. Question number 5 is all fungi are. सभी फंगी क्या होते हैं. ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप, ऑप्शन बी सेप्रोट्रॉप, ऑप्शन सी हेट्रोट्रॉप, ऑप्शन डी पैरासाइट्स. So the correct answer is option B सेप्रोट्रॉप. Now let's move on to question number 6. Question number 6 is which of the following is included in 5 kingdom classification. So 5 kingdom classification में कौन कौन included है. 5 kingdom classification R.H. टेकर ने दी थी 1969 में, जिसमें उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेनली 5 किंगडम्स में क्लासिफाइड किए थे. फर्स्ट इज मोनेरा, second is protista, third is fungi, fourth is animalia and fifth is plantae. So now let's check the options. Option A monera, protista, animalia, plantae, algae. Algae is not a kingdom, so ये option wrong है. ऑप्शन बी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी. हम बाकी के भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन सी वायरस, प्रोकैरियोट्स, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया. वायरस किसी भी किंगडम के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया है 5 किंगडम के अकॉर्डिंग. ऑप्शन डी एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म. एल्गी इज नॉट अ किंगडम. Okay, now let's move on to question number 7. Question number 7 is who is the father of taxonomy among the following. Father of taxonomy कौन है. ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी एरिस्टोट, ऑप्शन सी माहेश्वरी, ऑप्शन डी बीरबल साहनी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लीनियस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. हेलोफाइल्स इज ऑल्सो कॉल्ड. हेलोफाइल्स को और क्या कहते हैं. ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एक्टिनोमाइसिटिस, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी आर्की बैक्टीरिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आर्की बैक्टीरिया.
Halophiles is classified under Archaebacteria. Now let's move on to question number 9. Question number 9 is, by how many criteria living organisms have been classified into 5 kingdom classification? तो 5 kingdom classification में नंबर ऑफ क्राइटेरिया कितने थे जिनके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया था? ऑप्शन E 2, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 3. So the correct answer is option C 5. Now let's move on to question number 10. Question number 10 is, prokaryotes are included in the kingdom. Prokaryotes कौन से किंगडम के अंदर इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी बेसिडियोमाइसिटीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोनेरा. प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज, वायराइड्स वर डिस्कवर्ड बाय. वायराइड्स को कौन डिस्कवर्ड किए थे? ऑप्शन ए डिनर, ऑप्शन बी वूज, ऑप्शन सी पास्चर and option D linger. So the correct answer is option A dinner. Next question is, the name virus was given by. virus name कौन दिए थे? ऑप्शन E बिजरिंग, ऑप्शन B मेंडल, ऑप्शन C dinner, ऑप्शन D हर्शी. So the correct answer is option E बिजरिंग. Now let's move on to question number 13. Next question is, virus have ऑप्शन ए डीएनए कोड लिपिड कोड, ऑप्शन बी डीएनए और आरएनए कोड प्रोटीन कोड, ऑप्शन सी डीएनए और आरएनए कोड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी डीएनए कंटेनिंग न्यूक्लियस लिपिड एनवेलप. लिपिड कोड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड एनवेलप वायरस में नहीं होते हैं. वायरस में प्रोटीन कोड होती है. डीएनए और आरएनए में से या तो डीएनए होगी या फिर आरएनए होगी, दोनों एक साथ नहीं होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डीएनए और आरएनए कोड प्रोटीन कोड. Now let's move on to question number 14. Next question is, a virus contains option A DNA, option B RNA, option C DNA or RNA, option D DNA and RNA. So the correct answer is option C DNA और RNA. DNA RNA दोनों एक साथ वायरस में नहीं होते हैं. Now let's move on to question number 15. Next question is, the main structural component of viruses. वायरस की मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोटिस्टा इंक्लूड. किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, ऑप्शन सी ईस्ट, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन डी मशरूम, पैरामीशियम, यूग्लिना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स. Hydra is classified under kingdom Animalia, Yeast is classified under kingdom Fungi, and mushroom is also classified under kingdom Fungi. Now let's move on to question number 17. Next question is, the study of fungi is. Option A cytology, option B mycology, option C virology, option D algology. So the correct answer is option B mycology. Now let's move on to question number 18. So the next question is, fungus cell wall is made up of. फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी carbohydrates. So the correct answer is option C chitin. Now let's move on to question number 19. Next question is, in fungi reserve food materials are. फंगी के reserve food materials क्या होते हैं? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स,
Option B, starch. Option C, protein. Option D, lipid. So the correct answer is option A, glycogen and lipid droplets. Now let's move on to question number 20. Study of lichen is called. Lichens की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी लाइकेनोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी. So the correct answer is option C, lichenology. Now let's move on to question number 21. Next question is, in lichens fungal component is known as. lichens में fungal component को क्या कहते हैं? lichens is a symbiotic relationship between fungi and algae, and option A is mycobiont, option B is phycobiont, option C A and B, and option D none of this. So the correct answer is option A, mycobiont. Now let's move on to question number 22. Next question is, the plant cell without chloroplast is. Option A algae, option B fungi, option C bryophytes, option D pteridophytes. So the correct answer is option B, fungi. Now let's move on to question number 23. Next question is, symbiotic relationship is found in. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उससे कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों को उनसे बेनिफिट होता है. लेट्स चेक द ऑप्शन. ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट, ऑप्शन डी लाइकेन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लाइकेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. Next question is, plant of this group possess naked seed. प्लांट का वैसा कौन सा ग्रुप है जिसमें नेकेड सीड होते हैं, मतलब कि सीड फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं होती हैं. आपने मैंगो देखी होगी, उस पर सीड फ्रूट के अंदर होती है, वो कवर्ड होती हैं. लेकिन इसमें हमें बतानी है कौन सी ऐसी प्लांट की ग्रुप है जिसमें नेकेड सीड होती हैं. ऑप्शन ए टेरिडोफाइट, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म्स, option D bryophytes. So the correct answer is option C gymnosperm. जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड होती हैं, एंजियोस्पर्म्स में सीड फ्रूट वॉल से कवर्ड होती हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट के लिए कौन सा सेंटेंस सही है ये बताना है. ऑप्शन ए दे आर ऑटोट्रॉफिक, option B vascular tissue are absent, option C fertilization take place in the presence of water, option D all of the three. So the correct answer is option D all of the three. Bryophyte plant kingdom के अंदर classified हैं and इसमें vascular tissue absent होते हैं, fertilization water की presence में होती है, इसलिए इन्हें amphibians of plant kingdom भी कहते हैं. Now let's move on to question number 26. Next question is, in which plant gametophytic phase is main and a sporophytic phase is subsidiary. कौन से प्लांट में गैमेटोफिटिक फेज जो होती है वो पूरी लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा होती है, मेन होती है, और जो स्पोरोफिटिक फेज होती है वो गैमेटोफिटिक फेज से कम होती हैं, मेन नहीं होती हैं, बट उनका भी रोल होता है लाइफ साइकिल में. सो द ऑप्शन ए इज ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, option C gymnosperms, option D angiosperms. So the correct answer is option A bryophytes. Now let's move on to question number 27. Next question is, the first land plant on earth was. First land plant कौन थे अर्थ पे. ऑप्शन ए bryophytes, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म. So the correct answer is option B pteridophytes. First land plant on earth pteridophytes थे, इसलिए इन्हें reptiles of the plant kingdom भी कहते हैं. Now let's move on to question number 28. The tallest living tree in the world is.
टॉलेस्ट लिविंग ट्री बतानी है वर्ल्ड में। ऑप्शन ए जेमिया स्पीसीज, ऑप्शन बी इक्विलिप्टस स्पीसीज, ऑप्शन सी वुल्फिया स्पीसीज, ऑप्शन डी सिकोया स्पीसीज। So the correct answer is option D, Sequoia species. Sequoia is a gymnosperm. Now let's move on to question number 29. Next question is the smallest gymnosperm is option A Jamia species, option B Eucalyptus species, option C Wulfia species, option D Sequoia species. So the correct answer is option A Jamia species. Now let's move on to question number 30 and today's last question. Xerophatic character are present in. Xerophatic character किसमें present होती हैं? Option A bryophytes, option B pteridophytes, option C gymnosperms, option D angiosperms. So the correct answer is option C gymnosperms. थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ बेल आइकन को ऑल पे हिट करना ना भूलें। थैंक